بخار السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام بچے کیا حال ہے؟ سر میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی بیٹا وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. نہیں. نہیں السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے شکر سر اللہ ٹھیک کا. ہے. جی سر الحمدللہ سر آپ سنائیں. الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں؟ بہت زبردست. اوکے بیٹا اٹینڈنس ذرا جلدی سے اللہ لگاتے مبارک. ہیں. اوکے عبد سر. القدیر اوکے سر. ایک سیکنڈ بیٹا یہ دوسرے سیکشن کی اٹینڈنس اوپن ہو گئی ہے.
حارث آپ نے ویوز بنائے ہیں تو وہ بھی شیئر کر لیں پلیز. نیکسٹ سر رول نمبر وائز کر لیتے ہیں تاکہ نا 1 منٹ سے میں نا نکال لیتی ہوں. جی بچوں اٹینڈنس شروع کرتے ہیں. عبد المعیز عرفان. اچھا جی حارث سے پہلے سر عبد المعیز عرفان ہیں. عابد علی. Present, sir. آفاق احمد. Present, sir. عفیفہ سہیل. Present, sir. علی حسن. علی حسن. Present, sir. علی ممتاز. Present, sir. Present, sir. علیزہ نذیر. علیزہ شہزاد. اللہ بچایو. present sir. عامر حیات. امن عادل. عاقب صدیق. Yes sir. ارباز خان. Yes, sir. عروج ریاض. عروس آصف. Present. عائشہ انور. Present, sir. عائشہ ہارون. Present, sir. عائشہ خان. Present, sir. بابر علی. Present, sir. بخت علی. Present, sir. بسمہ جاوید. Present, sir. دور محمد. ایمان خان نیازی. Present. عزت تبسم. Present, sir. فہد اکرم. فیصل محمود. Present. فیصل صالح. فیضان خان. فاطمہ اعجاز. Present, sir. گل زمان خان. حبیب اللہ خان. Present, sir. حمزہ فاروق. Present, sir. حمزہ فاروق. اوکے. حارث الہی. ہارون رشید. حسنین طاہر. حمزہ یوسف. افرا بھٹی. Present. عمران عالم. Present, sir. ازما. Present, sir. جنید انور. کامران ناصر. کمل حسنین. Present, Come on. sir. کاشف. Present, sir. کاشف کے بعد ہے کاظم علی. Present, sir. احسن مرتضی. Present sir. مانور حسن. ملک عبد الوہاب قاسی. Present, sir. مروہ ماہم. Present, sir. مریم ممتاز. مہر زریاب علی. Present, sir.
میاں افنان. مناہل افضل. مناہل افضل. Afnan present, sir. Afnan present. مناہل افضل. محمد اسلم. Present, sir. Mohammad Aslam. ٹھیک ہے. محمد ارشد. مبرہ ارشد. Yes, present. مبرہ ارشد ہیں. اوکے. مبین بٹ. مبین بٹ. جی سر. اوکے. مبین بٹ. مدثر عمر. Present, sir. ایان الرحمان. present sir. فائز اکلیم. فائز اکلیم. آپ لوگ اپنے مائکس بند رکھیں. مجھے طرح طرح کی ڈفرینٹ آوازیں آ رہی ہیں. صرف اسی شخص کا مائک آن ہوگا جس کی اٹینڈنس کال ہو رہی ہے. سب کے مائکس بند ہونے چاہیے. اور اگر میں نے کسی بندے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ریلیونٹ انفارمیشن کو لانچ کرتے ہوئے تو ایگزامپل کریٹ ہو جائے گی اس کی. یہاں پر محمد حمزہ. محمد حاشر. Present, sir. محمد حسن. present sir. جہازیب خان. Present, sir. کمال اویس. Present, sir. محمد اکاشا. Yes, sir. Present. عثمان خان. عمار اصغر. Present, sir. انس قدیر. Present. حیدر اسلم. Present. خبر علی. محمد منصور. Present, sir. اوکے. شہریار خان. شہریار خان. Present, sir. توقیر فاروقی. Sayyid present. اوکے Present, sir. توقیر فاروقی کے بعد ہے محمد عمر. Present, sir. عزیر قاسمی. Present, sir. ولید بٹ. Present, sir. منزہ کیسر. Present, sir. منی مشتاق. Present, sir. مشتاق رشید. مستنصر رشید. Present, sir. Present, نادیہ sir. نورین. اوکے. نادیہ نورین. نادیہ. نمرہ عارف. Present, sir. نعمان پرویز. Present, sir. Yes, present, sir. رابعہ فضا عامر. Present, sir. رانا حیدر ممتاز خان. رازیب خان. Yes, sir. Present. سعد احمد. سعد نور. Present, sir. سعید احمد. Present, sir. صغیر علی. Present, sir. شہزادہ سیاب. سیف الرحمان. Present, sir. سلمان علی. سلمان علی. سنگین خان. Present. ثاقب شہزاد. Present, sir. سارہ عالم. Present, sir. شانزہ اقبال. سوریا کوثر. Present, sir. سویرا ہارون. Present, sir. سید محمد شاہ زمان. Present, sir. سید محسن رضا بخاری. Present, sir. سید محمد موسیٰ. سید محمد موسیٰ. طاہا جاوید. Present, sir. اسامہ لاغاری. اسامہ شبیر. Present, sir. وجدان الحق. Present, sir. وردہ عابد. Present, sir. یسرا عارف. یسرا عارف. ظہر رانا. زنیرہ ظفر. جلدی سے جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے ان کی رول کال کرتا ہوں. اگر وہ آ گئے ہیں تو بتا دیجیے گا. عبد المعز عرفان. علیزہ نذیر. علیزہ شہزاد. Present, sir. کون شہزاد؟ علیزہ شہزاد. Yes, sir. جی سر. عامر حیات. آمنہ عادل.
Aruj Riaz, Dur Muhammad Faisal. Present, sir. Okay. Fahad Akram, Faizan Khan. Present, sir. Faizan Khan. Gulzaman Yes, sir. Khan. Fazan Khan. Okay. Gulzaman Khan, Haris Elahi, Harun Rashid, Hasnain Tahir, Hamza Yusuf, Junaid Anwar, Kamran Nasir. Present. Sorry. Mahnur Hassan, Mariam Mumtaz, Manahil Afzal, Mubin Bhatt, Muhammad Hamza, Muhammad Hashir. Present, sir. Mubin Bhatt. Present, sir. Muhammad Hashir. मुबीन भट्ट कहाँ से आ गया एक ही बार? मैंने मुबीन भट्ट का नाम तो इतनी देर बाद क्यों नहीं आप मौके पे बोलते? मोहम्मद हमजा हैं, मोहम्मद हमजा, उसके बाद उस्मान खान, खबर अली, नादिया नौरीन, मुमताज खान, साद अहमद. Nadia Noreen is present, sir. साद अहमद, शाहजादा, साहिबजादा सयाब, सलमान अली, शानजा इकबाल. Yes, sir. Salman Ali present. Salman Ali. Okay. शानजा इकबाल, सैयद मोहम्मद मूसा, उसामा लगारी, युसरा आरिफ, जोहर राना, जुनैरा जफर. चैलेंज जनाब. ओके गाइस. सर जुनैद अनवर प्रेजेंट है सर. बट आप जब अटेंडेंस 2 बार में कॉल हुई है, इसके बाद मैंने कोई अटेंडेंस नहीं लगानी. नहीं सर, दोनों बार मैंने आपको जवाब दिया है सर. तो मैंने क्या बोला है आपको? ऑप्शन लगाई है मैंने आपकी. जब प्रेजेंट बोला है तो फिर लग गई होगी. ओके गाइस, so today we are going to start with the new topic, and that new topic is the 18th Amendment. The 18th Amendment. You know, this was basically an amendment which was being created by Pakistan People's Party in 2010. From that point onward, up till now, very serious circle of Pakistan, they are showing their reservation on the 18th Amendment. And some people, they have talked and suggested that the 18th Amendment is more dangerous than the 6 points of Sheikh Mujibur Rahman. So because of this 18th Amendment, the Federation of Pakistan is under threat. The people, they are of the opinion that because of this 18th Amendment, the Federation of Pakistan is under threat. On the other side, some political parties, like mainstream political parties like Pakistan People's Party, and the like-minded other parties like PMLN and other parties, they are of the opinion that we will never be allowing any person to bring any kind of change in the essence of the 18th Amendment. In the essence of the 18th Amendment, we will not be allowing the people to change the things which are being generated in the Constitution under the 18th Amendment. So now there are two basically school of thoughts. One school of thought is of the opinion that this 18th Amendment is very dangerous. On the other side, another group is of the opinion that this 18th Amendment is more dangerous. And it is not dangerous. One is of the opinion that it is very dangerous. On the other side, the other group is of the opinion that it is not dangerous. It is basically the guarantee of strong federation in Pakistan. So in my today's lecture, we basically will be trying to find out, we people would be trying to find out how 18th Amendment is beneficial for the Federation of Pakistan, and if it is not beneficial, then how it is dangerous to the very Federation of Pakistan. So these are the things that we people would be learning today. Right, guys? Okay. Remember one thing, guys. The constitution that is existing today is of the Constitution of 1973. From 1973 up till now, the same constitution is going on, and
Total there are 280 articles in 1973 Constitution, and up till now, total 26 amendments they are being made a part of the 1973 Constitution. Total 26 amendments they are being made a part of 1973 Constitution. So first of all, we have to define what is meant by an amendment. What is meant by an amendment? Amendment क्या होती है? Amendment is basically any change within the content or the context of the Constitution is called an amendment. And why amendment is required? Amendment is required in order to make new laws to fulfill the new requirements. For instance, in 1973, our Constitution was made. In 1973, when our Constitution was made, many laws were being made in it. But according to 26 different amendments which are being made, those laws were not sufficient to fulfill the requirements of the new age. And in order to fulfill the requirements of the new age, new amendments were required. That's why total 26 different amendments they are being made a part of 1973 Constitution. And we people are supposed to talk about the 18th Amendment. 18th Amendment के बारे में अभी हमने बात करनी है. Remember one thing, guys. First 7 amendments in 1973 Constitutions were being made by Zulfikar Ali Bhutto Sahab. He was the creator of Constitution as well, the maker of Constitution. And first 7 amendments, they were being made during his age. And 1973 Constitution was basically a parliamentary constitution. It was basically promising a parliamentary system in Pakistan. In parliamentary system, you know, the chief executive of the government used to be the prime minister, and the president used to be a ceremonial head, a symbolic head. But then the 8th amendment was being made by General Ziaul Haq, and General Ziaul Haq tried to change the parliamentary system into presidential system. And the 8th amendment is very important in a way that it has brought a new form of system in Pakistan. New form of system means the parliamentary system was replaced with the presidential system, and in presidential system there used to be no prime minister, and the maximum powers they are given to the president to rule over the country. And then the 13th amendment came on. Other amendments were there. I am just talking about the major ones, the important amendments. Then the 13th amendment was being done by the Mian Nawaz Sharif, and Mian Nawaz Sharif again tried to replace the presidential system with the parliamentary system. So initially when Constitution came into being, it was a parliamentary in nature. And then in 8th amendment, General Ziaul Haq changed the parliamentary system into presidential system. And then in the 13th amendment, the presidential system was replaced with the parliamentary system. And then 17th amendment that was being introduced by the General Pervez Musharraf. The parliamentary system was again replaced with the presidential system. And then in 2010, the 18th amendment was introduced. And here what happened again, the presidential system was replaced with the parliamentary system. So what was actually going on in our country? Kya chal kya raha tha? Whenever there used to be any democratic setup, they usually favors and they usually try to practice the parliamentary form of system. And whenever there used to be the military government, the dictatorship in the country, the dictatorship or the military government has always tried to introduce the presidential system. When you people would be going through the introduction of political science, then over there you would be learning the many the benefits, advantages and disadvantages of both of these systems. So I am not going to talk about those things in this today's lecture. My focus is basically to talk about the 18th Amendment. So why one government was willing to bring the parliamentary system, the other government was willing the presidential system, and the whole system was going on. Achha, now coming to the 18th Amendment. Remember one thing, during the Pervez Musharraf regime,
Pakistan People's Party and PMLN, the Noon group of Muslim League, they made a charter of democracy. In Charter of Democracy, they promised with the people of Pakistan that when they would be coming into power, जब वो powers में आएंगे, then they would be doing what? They would be reforming, reinstating the constitution in its original form. They would be doing what? They would be reinstating the constitution in its original form. This was a promise that was being made by Pakistan People's Party and PMLN under the Charter of Democracy. They were of the opinion that there are many things which are being added in the content and the context of the constitution by the dictator, and dictators, they have polluted the constitution. Dictators ने क्या किया है? They have polluted the constitution. Constitution has been deformed. It is not in its original form. It is not in its original form. So under the Charter of Democracy, it was decided that when they would be coming into power, they would be bringing the actual shape of Constitution, 1973 Constitution, whatever the pollutions which are being added by the dictators, what are the unnecessary things which are being added in the Constitution of 1973, they would be taking out of it and they would be reinstating the original shape of 1973 Constitution. This was the mindset. And this was a promise even. And when Pakistan People's Party in 2008 election won the election, and now this was the time for them to fulfill the promise which was being made by them with the nation. अब उन्होंने promise पूरा करना था. Then what happened, guys? And in order to fulfill this promise, and in order to, according to themselves, according to their own promise, they were supposed to reinstate the constitution in its original form. A committee was made. The name of the committee was Parliamentary Committee on Constitutional Reforms. A committee was made, and the committee was composed of 26 members under the leadership of Senator Raza Rabbani. And this Parliamentary Committee on Constitutional Reforms was given the responsibility to suggest the draft of the amendment. And the draft of amendment, according to which they were supposed to reinstate the constitution in its original form. And this constitutional committee worked almost 2 years. They consulted more than 982 different people, political parties, associations, organizations, government entities, non-government entities, and then they formulated a draft of the 18th Amendment. And that draft was presented on the floor of Assembly in 2010. And then what happened, ladies and gentlemen? In 2010, the draft was presented on the floor of Assembly, and in favor of this draft, total 292 votes were being casted in favor of the 18th Amendment from the National Assembly, and 90 votes were casted in favor of the 18th Amendment from the Senate. Not a single vote was casted against this 18th Amendment. Not a single vote was being casted against the 18th Amendment. Yani कि unanimously it was approved. And those who were not willing to cast their vote against it, they remained abstained. They never casted their vote. And the people who were not willing to be part of this approval process, they remained absent on this day. But not a single vote was being casted against the 18th Amendment, and it was unanimously approved. Okay, right? As I told you that the Parliamentary Committee on Constitutional Reforms was composed of 26 members. So in those 26 members, 5 people were from the Pakistan People's Party, and 3 people were from Pakistan PMLN Noon group, Nawaz Sharif group, and 5 people from Pakistan Muslim League CAF group, Quaid-e-Azam group. And then two members were being taken from the other political parties, for instance, Muttahida MQM, Muttahida Qawmi Movement, ANP, Jamiat Ulama Islam Fazlur Rahman, and so on and forth. This is how the 26 members were composed of from the different political parties. But 5 people were from Pakistan People's Party, 3 were from Pakistan PMLN, and 3 were from Pakistan PMLQ. And rest of the other parties, they were sending their 2 representative. This is how
the committee was constructed, and the draft of 18th Amendment was approved. Now, look here. The promise was they were supposed to reinstate the 1973 Constitution in its original form. They wanted to take out the things which are being included according to them by the dictators within the content and the context of the Constitution. They wanted to uproot those things, take out of those things from the content, and they wanted to purge the Constitution. They wanted to purge the Constitution. They wanted to give the actual shape of Constitution. They wanted to remove the modification. Remember one thing, guys, under the 18th Amendment, total 102 changes were being made. Total 102 changes were being made in 70 articles of 1973 Constitution. As I told you earlier that there were total 280 articles, and under this amendment, 70 articles were totally changed, and in 70 articles, 102 changes were being recommended. Total 102 changes were being made. The biggest criticism against this 18th Amendment is that the critics, they are of the opinion that instead of reinstating the shape, they have changed the quarter of the whole Constitution. They have changed the quarter of the whole Constitution. And if the government was willing to bring change to such a great extent within the content and the context of the Constitution, then instead of bringing an amendment, they were supposed to go for the referendum rather than bringing an amendment and getting it passed from the floor of the assembly, because it was a huge amendment. Total 102 changes in 70 articles were being started, and the quarter of the Constitution was changed. This is the biggest the defect. But now I will taking your attention to the points by some of the people in Pakistan. They are considered as negative points, and some people, they believe no, these were the very positive points. Let's talk about that. The very first amendment was changing the name of 3 provinces. KPK, the Pashtun population of Pakistan, was of the opinion that Sindh is for Sindhis, Punjab is for Punjabis, Balochistan is for Baloch people, and our province, which was at that time named as NWFP, should be renamed according to our own wishes and desires. Our province should be renamed according to our own wishes and desires. So ANP government was there at that time, and ANP government came up with the name of Pakhtunkhwa. Then, on the persuasion of Mian Nawaz Sharif, the word Khyber was added to the name, and the word Khyber was suggested by Mian Nawaz Sharif, and Pakhtunkhwa was being suggested by ANP, and this is how the NWFP was renamed as Khyber Pakhtunkhwa, KPK. NWFP was replaced with the KPK, or Khyber Pakhtunkhwa. The word Khyber was inserted on the suggestion of Mian Nawaz Sharif. Anyway, guys, this was the one thing. And when the name was respelled, or the province was renamed, then the Baloch people, they also wanted to correct the spelling of their Balochistan province. Earlier, 2 spellings were being used. One Baluchistan, the other was the Balochistan. Earlier spellings were like Baluchitan, Balu, Balu, Baluchistan, Chistan, Balochistan. It was named as Baluchistan. So people of Balochistan, they were of the opinion that we are not Baluchistan, we are Balochistan. So instead of U, O was inserted in the spelling. And now the official spelling of Balochistan are Balochistan, Balochistan. And when the Balochistan spellings were corrected and they were being made officially, and then the Sindh people, they also wanted to correct their name. And earlier, Sindh was renamed as Sindh and Sindh, but they wanted to make it official.
And instead of Sindbad and Hindbad, they were of the opinion they are basically the fantasy character. They have nothing to do with our provincial name. So on their persuasion, the H SIND, the earlier spellings were SIND, and H was inserted in the spelling. So this is how the three provinces of Pakistan, either they were being renamed or they were being respelled. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Yes, sir. That's great. Zabardast. Then coming to the other things, the very, very important thing, guys, very, very important thing. In 1973 Constitution, you people have already gone through the doctrine of necessity. You people are having better understanding of the very story of wolf and blade. I know it very well. I know it very well. Whenever there used to be any martial law in our country, the judiciary was readily available to have a stamp of attestation, to have a stamp of affirmation over the illegal action of every dictator. So whenever the martial law or emergency was imposed in our country, it was declared by judiciary as legal most of the times. It was declared as legal. Every illegal action most of the times was declared as legal. So in 1973 Constitution, Article 6 suggests that if from now onward any person would be trying to abrogate the 1973 Constitution or would try to impose martial law or emergency in our country, then that person would be treated through the case of high treason. Article 6 कहता है, if any person would be trying to abrogate the Constitution, that person would be treated through the high treason. High treason क्या है? संगीन बगावत कहते हैं कि अगर कोई बंदा मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेगा और इमरजेंसी इंपोज करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, उसके खिलाफ हैंग किया जाएगा, उसको हैंग कर दिया जाएगा और उसको डेथ नेक सजा दी जाएगी। हाई ट्रीजन की जो सेंटेंस है वो डेथ नेक है, सेंटेंस डेथ नेक है, यानी कि मौत है, फांसी है। दिस वाज रिटन इन, एक मिनट बात पूरी सुने पहले। तो डेथ नेक दी जाएगी। अब 18th अमेंडमेंट में इस चीज की क्या चेंज आई है? 18th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि इट इज नॉट रिलेटेड टू द जस्ट डिक्टेटर ओनली, it is not just related to the dictator only. And from now onward, if any judge of Lahore High Court or any High Court of Pakistan or the Supreme Court of Pakistan, if any judge who would be trying to declare it legal as well, that judge would be treated through the case of high treason. Now, not only the dictator would be having this death sentence, but also the judge जो उसके ऊपर स्टैंप लगाता है, उसको भी हाई ट्रीजन का मुकदमा फेस करना पड़ेगा, उसको भी हैंग किए जाएंगे। अब असलम बहुत जज्बाती हैं और लेक्चर में हाथ खड़ा करने के बजाय बीच में टोक देते हैं। I would be requesting him to, whenever he is willing to raise any kind of question, please raise your hand. अच्छा, एक बात, दूसरी बात क्या है, जरा अगली बात सुने मेरी। अच्छा, परवेज मुशर्रफ के ऊपर ये जो इन्होंने बात की है, उनको सजा दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेठ आबिद ने सजा दी थी और उसके अंदर कहा था कि परवेज मुशर्रफ को वापस लाया जाए और उनके खिलाफ डेथ नेक हाई ट्रीजन का मुकदमा चलाया जाए। फैसला हो चुका हुआ इनके खिलाफ, और अगर वो नहीं आते और बाहर मर जाते हैं तो उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाए और उनकी लाश को डी चौक में 3 दिन तक लटकाया जाए। ये एक जज ने फैसला किया है अकॉर्डिंग टू द 18th अमेंडमेंट, और ये फैसला हो चुका है। तो अब who knows के the same kind of punishment is going to be applied on these people who are going to abrogate the constitution in future. Who knows अब वो इसके ऊपर हो जाता है कि नहीं हो जाता। अच्छा, तो पहले जज जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता था, मार्शल लॉ लगाता था, दैट पर्सन के लिए था सिर्फ। लेकिन होता क्या था कि जब जुडिशरी वहां पे मौजूद होती थी, वो उसके ऊपर लीगल स्टैंप लगा देती थी, तो वो उसका जो इलीगल एक्शन होता था वो लीगल डिक्लेयर हो जाता था।
तो अब उस जज को भी पकड़ा जाएगा. This was written in 18th Amendment कि not only the dictator but also the judge both would be facing the case of high treason and they would be facing the punishment of high treason जो कि मौत है, सजाए मौत है. These were the things. Okay guys, अब आगे चलते हैं. So this was very 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 important thing that is basically being incorporated in the 18th Amendment in 1973 Constitution. अच्छा ना आगे चलें. In the whole history of Pakistan, we citizens and you citizens, me and you, all of us, they got three basic fundamental rights. They got their three basic fundamental rights. What are those fundamental rights? First time in the history of Pakistan, now I as a citizen of Pakistan and you people as the citizen of Pakistan, we are having the right of a fair trial. The right of fair trial. यानी कि अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाहर की मूवीज के अंदर कि whenever suspect is being arrested by the law enforcement agencies, the very first thing that suspect does is that they request the police or other law enforcement agencies to please get his lawyer first. वो उससे सवाल पूछता कहता I will not be talking to you, get my lawyer first. तो यहाँ पे भी Pakistan के अंदर first time this right is being acknowledged that every person in Pakistan would be having the constitutional right to have a fair trial. अब इसमें बहुत से जैसा कि ये मिसिंग पर्सन का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में. मैं नहीं कहता कि ये सारा ही गलत है, इसमें बहुत मैनी केसेस जो हैं जेन्युइन भी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर बीइंग एग्जैजरेटेड. और वो जो एक लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अफगान जहाद के अंदर मारे जा चुके हैं आफ्टर द 9/11 एंड स्टिल देयर नेम्स दे आर बीइंग प्लेस्ड इन दी. और कुछ नए लोग जो डिस्पर्स हो रहे हैं. और मैंने जैसे क्या बताया मोर देन ये जो NATO countries, if ISAF, they are sitting in Afghanistan, their agencies, they are working in Pakistan. So more than 60 countries intelligence agencies, they are operating in Pakistan. More than 60 countries and intelligence agency. And on one pretext or the other, they are basically trying what? They are trying to allure Pakistani people against the state of Pakistan. And और उनको वो करने के बाद they are doing what? They are trying their level best to make them anti-state. और वो गायब हो जाते हैं अपने घरों से because they got the impression that when their information is already being leaked and when they would be coming back to their home, their family would be suffering. That's why they are dispersed. मैं ये नहीं कह रहा कि the actual issues नहीं हैं, actual issues हैं. अब उनके लिए भी constitution कहता है the right of fair trial is available. अच्छा, अब दूसरी बात जो है first time in Pakistan the right of information ये हमें दिया गया. आपको पता है this is basically a tradition in every great country that every state secret is basically made public after 20 years, 30 years or 50 years whatsoever. State secrets, they are made public. Like United States of America, they make their state secrets public after a specific time frame. After specific time frame के अंदर वो उसको public कर देते हैं. Okay, right, that's great. अब अगर मोहम्मद असलम या मलिक अब्दुल वाहिद या सारा असलम या ये जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आप में से कोई बंदा अगर he is willing to know what actually happened during the OBL operation on 2nd May operation, एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ था क्या हुआ था, I want to know, then you have the right to know from the High Court to ask the concerning people of government. We want to know what actually happened. क्यों पाकिस्तान के अंदर हमूदुर रहमान commission is not being made public? Why we are putting everything under the curtain of secrecy? Why? क्यों लियाकत अली खान कत्ल शहीद हुए, कैसे हुए, उनकी investigation को public नहीं किया गया. East Pakistan crisis हुआ, why Hamoudur Rahman is not being made public? Why we are getting these things from the other sources rather than the state? Those people who are responsible, they should be punished. Why we are keeping few things under the dark curtain of secrecy? क्यों हो रहा है? तो ये right of information to me, given to me, to all of us, given by the 18th Amendment. And then, ladies and gentlemen, another thing is Article 25A. ये जो right of जो fair trial है under the Article 10A, the right of information under the Article 19A, and the right of free education under the Article 25A, means my kids and your kids and your siblings and other people till the age of 16 years
and they are having the right to get free education from the state of Pakistan. And ये पहले से पहले नहीं recognize किया गया था, लेकिन अब now the question comes के laws are made. Is there any implementation of these laws? I am of the opinion that with the positivist frame of mind, with the positivity, I am of the opinion that the news is these laws were not existing earlier, and now these laws are part of the 1973 Constitution. Sooner or later, when the awareness would be coming, when people, they would be committing more and more to the constitutional norms and traditions, then the same rights which are given by the governments in 2010 would be applicable to not only if our siblings or our kids, they would be enjoying these rights in future, inshallah. अच्छा, these were the empire. अच्छा, इसके अलावा अभी तक मैंने थोड़ी सी चीजें आपसे डिस्कस की. अब आते हैं एक very notorious thing was also being made a part of 1973 Constitution. What was that? No intra-party elections. In 17th Amendment, the 17th Amendment that was being made by General Pervez Musharraf, in 17th Amendment, it was written that once you are criminal, forever you are criminal. If you are a murderer, you are a rapist, you are corrupt, whatsoever, you are a certified criminal. Certified criminal means you are being punished by the court because of any crime, then you will not be allowed to participate in politics. You will not be allowed to participate. पहले मैं इसको no intra-party election की पहले बात करता हूँ. Article 17A की पहले मैं बात करता हूँ, फिर यही concept को मैं आगे लेकर चलता हूँ. According to the 1973 Constitution and 18th Amendment, it is written that in 17th Amendment, it was written that every political party in Pakistan would be conducting their intra-party elections. अपनी party के अंदर elections करेंगे. And in 18th Amendment, this provision of 17th Amendment is removed, and it is written that there is no need of having intra-party election. इसका मतलब क्या है? Means these political parties like Pakistan People's Party, like PMLN and other political parties, ENP, etc., they are willing to have what? They are basically favoring the hereditary politics in Pakistan, Morusi Siyasat. They want to see democracy in our country. They want to see democracy in our country, but they do not want to see democracy in their own parties. Why we are destined to face the same Nawaz Sharif, the same Zardari and their kids and the Fazlur Rahman and the ANP and Amr वगैरह वगैरह वगैरह. Why? Why is the people who have struggled for their whole life in order to protect their political rights and they have served their political party, why those workers, they cannot become the head of the party? Why? Because of their sincerity, because of their services. Why they can't be made? Why Nawaz Sharif would always be, and after the Nawaz Sharif, his daughter or his sons, they would be the head of the party? Why? Why there are no inter-party election? It means that these political parties, they are favoring what? Hereditary politics in Pakistan, Morusi Siyasat. They want to see dictatorship in their parties, then they want to see democracy in there. Until unless they are not democratic, how can they create democracy, or how can they practice democracy in our country? बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंट्रा-पार्टी इलेक्शंस, ये इंट्रा-पार्टी इलेक्शंस की मैंने बात की है. अब आगे जरा देखें. अब एक आर्टिकल 62-63 की बात है. In 17th Amendment, it was written that once you are criminal, you are a certified person, means you are being punished by the court, either in the case of the rape, murder, loot, deceit, whatsoever, any kind of crime, you are being punished by the court, and then you would never be allowed to participate in Pakistani politics, because criminals, they are not allowed to participate in Pakistani politics. And if they are allowed to participate in Pakistani politics, what does it mean? It means that criminals, they would be sitting because of the power at their back, in terms of the resources. They would be sitting in parliament, and accordingly they would be making laws, and they would be deciding about the fates of the people. And this was written in 17th Amendment. The 17th Amendment, was being made by General Pervez Musharraf, and it was written that once you are criminal, forever you are criminal. You will never be allowed to participate in Pakistani politics. And here, what is written? It is written that criminals,
with few exceptions, with few things in it, they are allowed to participate in politics. Means, what does it mean? It is written that if you have committed a crime, you and you are being you are being punished by the court, or आप court ने आपको punish कर दिया, then you would be completing your punishment, and after getting released from the jail, and then you will wait for the 5 years, and then after completing the 5 years you would be again participating in politics. ये declare कर दिया गया. I am of the opinion that if you are a certified criminal whatsoever, you should never be allowed to participate in politics. But here, what they have done means, for instance, have you not seen what happened during the Shahzeb Qatl case? A person was very powerful. That person killed the person. उस बंदे को मार दिया. And after that, what happened? After that, the person was given punishment, and वो उसके पास resources बहुत है. His parents paid the diyat, the blood money. उसको blood money दिया, कोई 20-30 अरब रुपया जितना भी दिया. And then that criminal was coming like the sign of victory from the court coming out. और इस तरीके से जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास resources हैं, what they are doing actually, they are basically trying to use the official apparatus. किस तरीके से कि they are using the official apparatus, they are using that apparatus for their favor, और अपने favor में use कर रहे हैं. This is what is happening. Powerful कि जिसके पास पैसा है, वो पैसा दे के, आज उसने कत्ल किया, पैसा दे देगा, blood money दे के बाहर आ जाएगा, then that person would be participating in politics. This is again, I believe that it is not good. लेकिन in 18th Amendment, the criminals now, they are allowed to participate in politics. Another very important thing is with reference to the party politics. What is that? Defection clause. For instance, if a party has made a policy, party ने policy बना ली है. वलीद, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैंने हाथ खड़ा देखा है तुम्हारा. Wait. If a party, for instance, People's Party or PMLN or PTI, they have made a policy, and within the party there are few people, they are coming up with the idea that whatever the policy is being made, we are not having our reconciliation over it. They believe that these policies should not happen. Under the defection clause, 63A, members of party, they are not allowed to show their difference of opinion to the leadership. And if they would be showing and they are insisting on their point of view, then they would be expelled from the party. When they would be expelled from the party, they will not only be expelled from the party, rather, they would also be expelled from the assembly as well. Because under the 18th Amendment, this right is given to the party head that if any person is not reconciling with the party policy, then that head would be writing a letter to the Speaker Assembly to please de-seat this person. We have already expelled this person from our party, and now you are also requested to send this person out of the parliament. Defection clause. ये हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब रवाज है कि पूरी दुनिया, जब अमेरिका की पॉलिटिक्स में देखें, डेमोक्रेट्स they switch their loyalties. Democrats, they usually sit on the benches with the Republican, and Republicans, they sit with the Democrats if they feel that the party politics, the party policy is not good enough according to their perception. अब ये सबसे बड़ा क्या है, अगर बिलावल भुट्टो जो जरदारी हैं 25 इयर्स के हैं, उनके सामने पीपल्स पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स हैं. देखा है आपने सेनेटर रजा रबानी, एहतजाज हसन जैसे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी इंटेलेक्चुअल्स, दे आर सपोज्ड टू शो देयर हेड डाउन इन फ्रंट ऑफ देयर लीडरशिप. व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, दैट पर्सन इज कमिंग अप विद द आइडिया दैट आवर पार्टी शुड reconsider their policy, and the party, if the party is sticking to its policy, what does it mean? You are not allowing your individual to show their difference of opinion. और ये भी हुआ. ये जो बातें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकंड बेटा, क्या बात
ओके गाइस, तो ये जो चीजें आपने देखी हैं ये आपको कैसी लग रही हैं? सर बिल्कुल बैकवर्ड जैसे आपने की तरह। बात की, जैसे एतजाज हसन, रजा रबानी, अच्छी जैसे लग रही है एतजाज सर। हसन सर, जैसे आपने उसके ट्वीट्स वगैरह देखे हुए तो वो पीडीएम के काफी मतलब पोस्ट के अंदर होते हैं ना। अच्छा, कोई और बेटा? सर मलिक आपने जी जी सर आपने कहा था कि वंस यानी कि जो एक बार क्रिमिनल कह दिया गया वो क्रिमिनल है, तो सर जैसे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला उन्होंने चीफ जस्टिस ने किया था, अब तो वो चीफ जस्टिस फातवा आ गया ना, तो क्या उसका फैसला चेंज हो सकता है, यानी रहम की या कोई और तरीके से? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर सजा हो गया तो उस पर अमल दरामद कब होगा? जब मर जाएंगे तब होगा या फिर? अच्छा देखें, ये दोनों जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा रिलेटेड इस तरीके से है कि मेरा ख्याल है इस फैसले के ऊपर रिकंसिडर किया गया था कुछ दिनों के बाद, और वो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको पढ़ लें। अब पाकिस्तान के अंदर देखें, पहले तो रूल्स ही नहीं थे, तो इम्प्लीमेंट कैसे होना है? जब बेटा इम्प्लीमेंट फैसले उस वक्त होना है जब हमारा जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन ठीक हो जाए। याद रखिएगा, एक हमारा इदारा अगर ठीक हो जाए, हमारे जुडिशरी जो कि इदारा वो ठीक हो जाए, तो ये सारा कुछ होने हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अंजुम सताइश बाहमी बनाई हुई है हम लोगों ने आपस में, और हम अपने मुल्क के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। करप्ट लोगों के सारे लोग जानने वाले उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के फैसले ले लेती है। जब तक हमारे जजेस नहीं खड़े होंगे कानून की हुक्मरानी के लिए, तब तक ये कैसे हो सकता है इम्प्लीमेंट? और दूसरी बात ये है कि वो हम में से हैं, हम खुद ठीक नहीं हैं। हम ऐसे गंदे लोगों को सियासत में लेकर आते हैं जो फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मुल्क की मशीनरी को यूज़ करते हैं। हमें भी सही होना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आंखों पर ये जो पट्टियां बंधी हुई हैं बुत को पूजने की, पार्टीज के बुतों को पूजने की, जब तक ये हमारी आंखों से पट्टियां नहीं हटेंगी और हम ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ फैसला नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हम कब मरेंगे जाना तो सब किसी ने है, लेकिन वलीद ये जो तुमने बात पूछी है, इसी हम क्या करते हैं, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारी थ्योरी और प्रैक्टिस के दौरान, हमारे जानने में और हमारे करने के अंदर जो कुछ, ये जब तक ठीक नहीं होगा, जब हम अपनी ज़ात को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मुल्क का कुछ ठीक नहीं होना। और फिर पाकिस्तान के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स का जो मसाइल का जो वजह है, वो आपकी जुडिशरी के अंदर पाई जाने वाली करप्शन है। आप जानते हैं, एक सिविल जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट के अंदर होने वाला जो फैसला परदादा फाइल करता है, दादा लड़ता है, उसका बेटा फिर फॉलो करता, फिर उसका बेटे को उसका डिसीजन मिलता है, 4 जनरेशन्स गुजर जाती हैं। इतना करप्शन है। तो हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे जुडिशरी को ठीक करने की ज़रूरत है। जब ये ठीक हो जाएगा, सब लोग ठीक हो जाएंगे। देखिए ना कितनी अकाउंटेबिलिटी थी कि उमर के दौर में एक बंदा उठ के खड़ा होता है, वो खुतबा दे रहे हैं, और एक बंदा उठ के कहता है, उमर ये बताओ, ये जो माले गनीमत से तुम्हें कपड़ा मिला था, उससे तो तुम्हारा बॉडी भी नहीं, इतने दराज कद थे, बॉडी पे नहीं आता था, बताओ ये ज्यादा कपड़ा तुमने कैसे लिया? तो फिर उनको, दिस इज द लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जब तक हमारे मुल्क में ये नहीं होगी कि लेमन पर्सन जाके पूछ सकता है। आपके मुल्क के अंदर तो देखें, जुर्माना दे के अपने अपने घरों को रेगुलराइज करवा रहे हैं। जुर्माना दे के आप अपने आप को बच जाते हैं। जो लोग जुर्माने नहीं देते उनके ऊपर केसेस वन आफ्टर अनदर केसेस आपने लगाए हुए। ये डिस्पैरिटी है। लॉ को क्यों कहते हैं कि वो अंधा है? लॉ को क्यों कहते हैं कि वो अंधा है? वो कोई डिस्टिंक्शन तमीज नहीं करता बिटवीन द मास्टर एंड स्लेव, वो इक्वली ट्रीट करता है। इसलिए कहते हैं लॉ इज ब्लाइंड, लॉ ब्लाइंड है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर लॉ क्या करता है? उसकी आंखें खुली हैं, वो पहले देखता है मेरा बंदा कौन सा है, दूसरा किसी का है, जो दूसरा किसी को उसको ठोक देता है वो। और ये हमारे मुल्क में हो रहा है। और सबसे बड़े प्रॉब्लम्स की जो वजह ये लॉ है, ये जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जैसा इंटरप्रेट करेगी वैसा वो, ये तो जादूगर मैजिशियन बन गए हैं। हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। दुनिया का जो सुपर पावर होगा, अगर 7 आर्टिकल से चल सकता है। आपको पता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स हैं। 280 आर्टिकल्स के आगे क्लासेस, सब क्लासेस, सेक्शन, सब सेक्शन, यानी आपने इसको भूल भुलैया बना दिया, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, अब कुछ चीजें और भी हैं जो सर लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें सर। कौन सा लास्ट पॉइंट? सर ये जो पार्टी से अगर निकाल देते हैं तो असेंबली से भी निकाल देते हैं। बेटा ये मैंने बताया डिफेक्शन क्लास है। आप पार्टी के साथ, आप पार्टी के लीडर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख ही नहीं सकते, और अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो वो पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा और पार्लियामेंट से भी निकाल दिया जाएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं।
उसके बाद removal of bar on third term of the office of Prime Minister and Chief Minister. Removal of bar on the third time of the office of Prime Minister and Chief Minister. वो क्या था? ये बड़ा important चीज़ है कि 17th Amendment में ये लिखा गया था कि if you are the Prime Minister, you are twice the Prime Minister, यानी 2 मरतबा पाकिस्तान के Prime Minister रहे हैं या 2 मरतबा से Chief Minister रहे हैं, then you will not be allowed to become the Prime Minister or the Chief Minister for the third time नहीं बन सकते. ये 17th Amendment में था. 18th Amendment में इसको बता दिया, रिमूव कर दिया गया. अब जितनी मर्जी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, जितनी मर्जी मरतबा चीफ मिनिस्टर बने, कोई बात नहीं है इसके ऊपर. तो इसको बेसिकली क्या किया गया, ये बेसिकली किसको ये डिजाइन करके, ये किसको जहन में रखकर मुल्क का आइन बदला गया, किसको जहन में रखकर मुल्क का आइन, सेल्फ इंटरेस्ट को सर. कौन सा सेल्फ इंटरेस्ट? नवाज शरीफ का इंटरेस्ट और बेनजीर भुट्टो साहब का इंटरेस्ट. नवाज शरीफ का इंटरेस्ट और उन्होंने दूसरी मरतबा बनना था ना प्राइम मिनिस्टर, और या तो चीफ मिनिस्टर आपके शहबाज शरीफ ने बनना था तीसरी मरतबा, यही था ना. बिल्कुल सर. हाँ, तो यस सर, यही था. अब जरा गौर से देखिएगा, ये मेरी एक बात हमेशा के लिए अपने कानों में और अपने जहनों में ये बात बिठा लें. पता है कौमें तरक्की कब करती हैं? कौमें तरक्की उस वक्त करती हैं जब स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो लीडर्स के नेशनल इंटरेस्ट के साथ रिकंसाइल कर जाता है, एक हो जाता है, फिर कौमें तरक्की करती हैं. और जब स्टेट के इंटरेस्ट को नीचे कर दिया जाए और लीडर्स के इंटरेस्ट ऊपर चले जाएं तो फिर कौमें तरक्की नहीं करती, फिर तबाही, बर्बादी और करप्शन होती है हमारे मुल्क में. हमारे मुल्क के आइन को, जो मुल्क का सबसे मुकद्दस चीज़ है, जो सबसे मुकद्दस किताब है, जो द लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है, उसको चेंज किया गया in order to just protect your self interest. दुनिया के अंदर मशहूर है. आप अमेरिका का सिस्टम देख लें, 2 मरतबा जो सदर रहता है, तीसरी मरतबा चाहे वो जितना भी सेहतमंद हो, जितना भी इंटेलेक्चुअल हो, जितना भी कोशिशें कर ले, वो नहीं आ सकते दोबारा. नए लोगों को मौका दिया जाए, नए लोगों को. हमारे मुल्क में क्या हो रहा है देखें आप. 40 साल से इन्होंने रूल किया है, 40 सालों से रूल किया इन्होंने, 36 सालों से रूल किया, and still they are adamant and they are of the opinion that when we will be coming in power we will be doing this and भाई पहले क्या किया तुम लोगों ने? No, ये इन्होंने किया. अब 18th Amendment के अंदर इस तरह की जो चीजें जब शामिल की जाई हैं तो फिर अब आगे देखिए. अच्छा, प्रेसिडेंट की पावर्स आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, initially Pakistani Prime Minister constitution was parliamentary, and then the presidential in 8th Amendment, then in 13th parliamentary, then in 17th presidential, then in 18th parliamentary. अब जब parliamentary बनाया गया, the powers of the presidents were to be surrendered. आपको पता है 17th Amendment प्रीवियस में शरीफ ने बनाई थी और ज्यादातर पावर अपने हिस्से अपने पास रख ली थी. उसने कैसे किया था? और अब जरा देखिए क्या किया 17th Amendment के 18th Amendment के अंदर. आर्टिकल 58(2)(b है, आर्टिकल 58(2)(b जिसके तहत द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज हैविंग द राइट टू डिसॉल्व द असेंबली, टू इम्पोज मार्शल लॉ, इमरजेंसी असेंबलियों को डिसॉल्व करने की पावर है. जरदारी वाज द प्रेसिडेंट अंडर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, एंड उसने आर्टिकल 58 को आधा चेंज किया, आधा पावर अपने पास रखी. चेंज किया कि नाउ ही वुड नॉट बी डिसॉल्विंग द असेंबलीज, लेकिन ही रिटेन द पावर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज चीफ्स, यानी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, नेवल चीफ की अपॉइंटमेंट का, एयरफोर्स चीफ की अपॉइंटमेंट की पावर अपने पास. आर्टिकल 58(2) भी इन सारी चीज़ों को कवर करता है. तो बेसिकली अगेन हियर क्या सोचा जा रहा था कि दे वांटेड टू रिटेन द पावर्स, और उन्होंने रखी, और आधी पावर्स उन्होंने सरेंडर की और आधी नहीं. और दूसरी बात, अच्छा, रोल ऑफ सेनेट इंक्रीज हुआ है हमारे. अच्छा, एक दो क्वेश्चन मुझे कमाल अवैस की बात कहना चाह रहे हैं. जी कमाल बेटा. Sir, according to 17th Amendment by Musharraf, sir, once a criminal, forever a criminal, sir, but in 2012, Yusuf Raza Gilani was sentenced to stand till 30 seconds in front of court. So as we can see, it's just to fight from the membership. कमाल अवैस बेटा, एक तो डिस्टॉर्शन इतनी ज़्यादा है आपके माइक के अंदर, इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है कि हम एक भी बात समझ नहीं सके. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल्स की. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि
17th amendment according ایک دفعہ جو کرمنل ہو گیا وہ دوبارہ میں نہیں آ سکتا، پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا سر. 2000 کو 30 سیکنڈ کے لیے سزا دی گئی تاکہ وہ دوبارہ صرف اس لیے دی گئی سزا کلیئر ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہ آ سکے. سر وہ ہے سزا دینا یا نہیں؟ دیکھیں کمال اویس، مجھے پھر تمہاری بات کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرمنلز کا مطلب ہے بڑے جو کرائمز آفینس ہیں ان کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. وہ تو شاید ان کی وہ جو ڈیفیمیشن کے اندر یا کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر اگر سزائیں ہوتی ہیں تو سم ہاؤ وہ اتنا بڑا آفینس نہیں ہے جتنا کہ آفینس ہے کسی کو مرڈر کرنا، ریپ کرنا، ڈکیتی کے اندر انوالو ہونا، لوگوں کو مارنا وغیرہ. ثاقب شہزاد کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. سر آپ نے کہا کہ 58 بھی پریزیڈنشنل ہوتی ہے پاور، تو سر اسے تو نواز شریف نے 1997 میں آئی تھنک ختم کر دیا تھا، تو پھر 2010 میں وہ آپ نے کہا کہ آدھی پاور اس نے رکھی اور آدھی ختم کر دی. ثاقب بیٹا آپ کو میں نے کیا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ 13th امینڈمنٹ میں پارلیمنٹری سسٹم کو ریسٹور کیا گیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاور ختم کر دی گئی. پھر 17th امینڈمنٹ میں دوبارہ سے پاور لے لی پریزیڈنٹ نے، پھر 18th امینڈمنٹ میں دوبارہ سے اس کو آدھا ڈیزالو کیا. تو یہ فلپ فلاپ چل رہا تھا، کبھی پاور لے لیتے تھے. تو یہ وہ بیسک ہے. جی صغیر علی بیٹا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو سر ہم نے کورٹ نے 30 سیکنڈ کے لیے سزا دی تاکہ صرف وہ پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائڈ ہو جائے سر. تو سر یہ کیا امینڈمنٹ ٹھیک تھی ہمارے لیے؟ کیا ہم قانون سازی کو سر اس طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے سر؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. بہت اچھی بات کی کمال اویس بیٹا. یہی میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کی اور وہ پھر ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوئی. جب تک ہم قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھ کے قانون سازی نہیں کریں گے اس ملک کی ترقی کا کچھ نہیں ہو سکتا. کسی صورت میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی صورت میں نہیں بڑھ سکتے. آپ کا بات کہنے والی بات بالکل ٹھیک ہے. محمد اسلم کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ سر کب سے ہاتھ کی کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے ابھی موقع دیا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشرف کے خلاف مشرف نے جو ایمرجنسی لگایا تھا تو پھر جج نے اس کے خلاف ایکشن وہ سزا بھی سنائی دی، پھر کیا ہوا سر؟ کیوں عمل درآمد نہیں ہوا؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے سر کہ پاکستان کا یہ جو بھی حکمران یہ وغیرہ غلط کام وغیرہ کر لے تو پھر یہ لندن موسٹلی بھاگ جاتے اور یا دبئی موسٹلی بھاگ جاتے، یہ کیوں سر؟ اچھا وہ بھاگتے اس لیے ہیں کہ ملک میں رہیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے وہ بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ پولیٹیکل بارگیننگ کرتے ہیں اور پھر واپس آ کے اپنے جرائم کو معاف کروا کے واپس آ جاتے ہیں. یا ان کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ونڈیکیشن ہوں گی، پولیٹیکل ونڈیکیشن ہونے کی اس وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں. اب وہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ پاکستان کے اندر سزا دی گئی، سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اچھا وہ اس کا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اچھا یہ اگین قانون کی حکمرانی اس وقت ہونی ہے جب پاکستان کے اندر یعنی کہ لوگوں کو کرمنلز کو سزائیں اس وقت ملیں گی جب رول آف لا ہوگا. جب ہم سارے ہی اپنی مرضی کا قانون بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ہی امپلیمنٹ کرواتے ہیں تو پھر ایسے صورتحال کے اندر کسی بھی صورت میں کسی کو بھی حقدار کو اس کا حق نہیں ملنا اور ظالم ہمیشہ رول کرے گا. اور یہ ہم خود کر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائے اور اس کو امپلیمنٹ کروایا اور یہی ہوتا رہا ہے. اور جو لوگ سیاست میں آتے ہیں انہی کے بیوروکریسی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے آرمی کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ہی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی کیس آئے اور اگر کیس آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے پھر ان سے فیصلے لے لیتے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں بیٹا. کافی سارے بچوں نے سوال ہاتھ کھڑے کیے ہیں، میں کس کو جواب دوں؟ جی بیٹا. سر کوئی اور ملک بھی ہوگا، کوئی اور کنٹری تو بھی ہوگا، موسٹلی لندن کامن ہے سر. سر پھر انٹرپول کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی یہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑنے کے لیے؟ دیکھ لیں عمران خان نے بھی کوشش کی تھی انٹرپول کے ذریعے کراچی کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو واپس لانے کے لیے، نہیں لا پائے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی کوشش کری ہے کچھ لوگوں کو لندن سے لانے کے لیے، تو نہیں لا پائے. ہم بیسیکلی چیزوں کو یہ دیکھ کر بیسیکلی یہ ان کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے کہ کون سے کیسز جو سیاسی کیسز ہیں اور کون سے ایکچول کیسز ہیں. پاکستان کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیاسی مقدمات اپنے
अपोजिशन को अपने मुखालफिन को बिठाने के लिए, उनकी ज़ुबान बंदी के लिए, उनको सज़ाएँ देने के लिए, अपने ज़ाती अनाद को की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ पर्चे बनाते हैं, उनको जेलों में देते हैं, उनको तंग करते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर होता है अमूमन। आप देखिए इस वक्त अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे निथरे हुए हैं वो या वो करप्ट नहीं है, लेकिन उसकी मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ कि ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें जो उनका एक्चुअल कसूर नहीं भी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर डाला जाता है और उन केसेस से कुछ नहीं निकलता। और वो जब कुछ केसेस से कुछ नहीं निकलता वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन 4-5 सालों के अंदर जो आपने उसको रगड़ा दिया है, जेलों में रख के तशद्दुद किया, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है जब उसमें से कुछ निकला ही नहीं। तो हमारे मुल्क के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो रिकंसाइल नहीं करती जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है। और यही जो लोग ये जो अब इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, जब ये गवर्नमेंट में होते थे तो ये भी वही कुछ करते थे अपनी अपोजिशन के साथ जब ये गवर्नमेंट में होते थे। तो दिस इज़ हाउ ये अपनी ज़ाती ईगो, इड और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी अना को तस्कीन देने के लिए अपने मुतासिरीन के साथ सियासी मुकदमात बनाते हैं और उनसे कुछ नहीं निकाल पाते। तो यही चल रहा है हमारे मुल्क में, देखिए आप। बिल्कुल सर, एक दूसरे से बदला ही लेते रहते हैं। और मतलब क्या, कहाँ है कौम का मुफाद? मुझे वो महातिर मोहम्मद की एक बात बड़ी पसंद आती है। सुना है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि अगर तुमने सिस्टम को ठीक करना है तो ये जो करप्ट लोग हैं सिस्टम के, इनको साथ लेके चलो और इनसे पूछो कि करप्शन कैसे होती है। और जब वो और इनको पता है वो करप्शन, और ये जब आपके साथ मिल जाएंगे, उनको कुछ ना कहो, इनको साथ मिलाओ। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौजूदा गवर्नमेंट हमें एक ऐसा सिस्टम दे के जाएगी कि जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन नज़र क्या आया, हमारी सारी उम्मीदों का भरम टूट गया, कुछ नहीं मिल पाया, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए कि ये अपने लिए मुस्तकबिल, ये भी अपने लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं छोड़ के जा रहे और कुछ नहीं कर पाए ये अपने मुल्क के लिए। जिन पुराने लोगों को गंदा कह के हमने उनको वोट नहीं दिया और ये मौजूदा सेटअप को लेकर आए, वो क्या कर रहे हैं कौम के साथ और उन्होंने क्या किया अभी तक। खैर चलता है, आगे चलते हैं। तो रोल ऑफ सेनेट इज आल्सो बीइंग इंक्रीज्ड। रोल ऑफ सेनेट को बहुत हद तक इंक्रीज किया गया है। किस तरीके से इंक्रीज किया गया है कि पहले सेनेट की 100 सीट्स थी, अब सेनेट में 104 सीट्स हैं एंड 1 सीट, टोटल 4 सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज, each from one each from every province, यानी कि 4 provinces they would be sending their 4 minority representative in Senate. So this is how the role of Senate is being increased. The seats of Senate they are increased. दूसरी बात ये है कि जो सेनेट के जो वर्किंग डेज हैं सेनेट के, वो 90 डेज से बढ़ाकर 110 डेज कर दिए गए हैं। यानी साल के अंदर अपने 90 दिन काम करना है कौम के लिए, जिसके पैसों के ऊपर आप पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उस कौम के लिए आपने साल में 90 दिन काम करना है। 100 दिन काम, 365 दिन काम नहीं करना, बाकी छुट्टियां हैं आपकी, अय्याशी करें। 90 से 110 दिन काम करने इन सेनेटर्स ने हमारे लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर सेनेट का इजलास है, सेनेट का इजलास चल रहा है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उसकी कैबिनेट है, वो सेनेट को रिस्पॉन्सिबल, पहले एक तो बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को, पहले प्राइम मिनिस्टर वाज जस्ट आंसरेबल टू दी नेशनल असेंबली। अब ये एक अच्छी बात की इन्होंने कि सेनेट भी बुला सकती है वज़ीर आज़म साहब के, इधर आओ ना ज़रा, ये क्या कर रहे हैं आप कौम के साथ, बताएं हमें। कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भी बुला सकते हैं, ये हो रहा है आजकल, वैसे हम लोगों ने बहुत देखा। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई गई इसके अंदर कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई नया ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता जब तक सेनेट का सेशन इन प्रोसेशन है। यानी सेनेट का काम है लॉ बनाना, तो सेनेट लॉ बना के दे दे। आपका प्रेसिडेंट क्यों का ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है, उसको क्या जरूरत है? अगर सेनेट का सेशन नहीं है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, तो फिर चलें वो कोई ऑर्डर जारी कर दे, प्रेसिडेंट कोई लॉ बना दे और फिर उसकी अप्रूवल ले लें। लेकिन अगर सेनेट का सेशन है और प्रेसिडेंट साहब का कोई ऑर्डर आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, उन सेनेट से लॉ बनाया लिया जाए। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बजट होता है, बजट की अप्रूवल सेनेट से भी होनी होती है, बजट की अप्रूवल सेनेट से भी होनी होती है।
اور سینٹ سے کس طریقے سے ہونی ہوتی ہے کہ پہلے سینٹ کے پاس جاتا تھا, اس کے پاس 7 دن ہوتے تھے کہ جس پہ اس نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا, یہ اس چیز کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے, اس چیز کے لیے کتنا بجٹ رکھا, تو وہ 7 دن کم ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے پاکستان کا $55 بلین سے زیادہ کا اینول بجٹ ہے ہمارا, اور اس پہ ساری چیزوں کو ڈیلیبریشن ڈسکشنز کرنے. تو اب کہا گیا کہ 7 days کے بجائے سینٹ کو 14 days دے دی جائیں. تو بیسیکلی 18th امینڈمنٹ میں رول آف سینٹ کو انکریز کیا گیا. پریزیڈنٹ آرڈر جاری نہیں کر سکتا, کوئی پریزیڈینشل آرڈر نہیں جاری کر سکتا اگر سینٹ ہے. وزیر اعظم اینڈ دا کیبنٹ, دیز پیپل دے آر آنسریبل ٹو سینٹ ایز ویل. اور 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات آپ کو بتایا کہ منی دی ڈیلیبریشن ٹائم از انکریز فرام 7 days to the 14 days, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. پھر 4 seats of minorities they are added in the Senate, earlier یہ نہیں تھی, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور اس کے بعد working days of Senate they are increased, 20 days they are added. From earlier they were supposed to work 90 days, now they are supposed to work 110 days. سال کے اندر انہوں نے کرنا ہے. تو رول آف پوچھ گچھ کا آپ نے کچھ کہا تھا کس کا بیٹا؟ پرائم منسٹر کو بلا سکتے ہیں یا ممبرس کو بلا سکتے ہیں, کیا کہا تھا سر آپ نے؟ بیٹا میں نے کہا تھا کہ سینٹ جو ہے وہ بلا سکتے ہیں, پرائم منسٹر کو کہیں گے آپ آئیے ذرا ہمیں بتائیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا پالیسی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہمیں بتائیے یہ کون سی پالیسی لے کے چل رہے ہیں آپ, کون سی اکنامک پالیسی, کون سی آپ کی پولیٹیکل پالیسی ہے وغیرہ وغیرہ, ان ساری چیزوں کو بتائیں آپ. اچھا اس کے بعد پریزیڈنٹ کی جو پاورز ہیں اس کو ریڈیوس کیا گیا. اب وہ میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 58 کو آدھا ریڈیوس کیا, آدھا پاورز اپنے پاس رکھی انہوں نے. حالانکہ اگر وہ ایمرجنسی نہیں لگا سکتا تو پرائم منسٹر پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر کا حق ہے یہ کہ وہ سروسز چیف کو اپوائنٹ کرے. لیکن پریزیڈنٹ کیونکہ زرداری صاحب تھے, وہ سب سے زیادہ پاورفل ڈیسیژن تھا, اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ پاور اپنے پاس رکھی. کچھ پاورز انہوں نے ڈیزالو کر دی, کچھ پاورز اپنے پاس رکھی. یہ دیکھ لیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا ہے. سر ہم نے کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی نہیں بنائی ہوئی کہ پارلیمنٹ کوئی بھی ایسا ملک کے خلاف قانون پاس کرے تو وہ پارٹی اس کے ایکشن کرے. سینٹ کی قائمہ کمیٹیز ہیں جو مختلف افراد, سینٹ کی قائمہ کمیٹیز ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کی کیبنٹ کام کر رہی ہوتی ہے, اپوزیشن کے کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی, گورنمنٹ کوئی پالیسی لے گئی, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اپوزیشن نے تنقید کرنی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ نے پازیٹیو اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اس پالیسی کا, اور اپوزیشن نے نیگیٹو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے جو اپروو ہوتی ہے وہ ایک بیلنسڈ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ نے جو چاہا وہ کروا لیا, ایسا نہیں ہو سکتا. اپوزیشن اگر اچھی اپوزیشن, تگڑی اپوزیشن ہو جیسا کہ اس وقت عمران خان کے پاس ہے, لیکن ان کو تو انہوں نے نیب کے اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں ڈنڈے کے زور پر. اگر ایک اچھی اپوزیشن, تگڑی اپوزیشن ہو تو گورنمنٹ کوئی پالیسی لے کر آ رہی ہے تو اس کو پہلے پالیسی کو فلور آف دی اسمبلی پر ڈسکس کیا جاتا ہے, اور وہ پھر گورنمنٹ کہتی ہے اس سے یہ اچھا ہوگا, یہ اچھا ہوگا, یہ اچھا ہوگا. لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اس سے کہتا ہے یہ برا ہوگا, یہ برا ہوگا, یہ برا ہوگا. تو وہ جو برائی جب ہائی لائٹ ہوتی ہے تو اس کو پھر میوٹ کیا جاتا ہے, اس کو کم کیا جاتا ہے, تو پھر عوام کے لیے جو پالیسی آتی ہے وہ بڑی پازیٹیو آتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہر گورنمنٹ کے خلاف تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اب اگر آپ نے اٹھا کے پارلیمنٹ کے اپوزیشن کے سارے مین بندوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے اور ان کے کیے ہوئے گناہوں کی بھی سزا دیں گے اور نہ کیے ہوئے گناہوں کی بھی سزا دیں گے, تو مطلب کیا ہے, گورنمنٹ پھر ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ چلا رہی ہے نا. اور یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, ہر گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے. نون لیگ نے بھی یہی کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی ہے. یہ ایک گورنمنٹ, یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, تو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. جی بیٹا. سر ایک کویسچن تھا کہ آپ نے درمیان میں قانون کی بات کی تھی کہ سر سوال یہ کہ جو بھی حکومت آتی ہے تو سینٹ اگر کوئی نیو قانون پاس کرنا چاہے تو سینٹ کر سکتی ہے کیا؟ دیکھیں کوئی بھی قانون جو بنانا ہوتا ہے دونوں ہاؤسز سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر وہ قانون نہیں بن سکتا. سینٹ بل پاس کرے گی, یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے, تو اس کو لوور اسمبلی سے بھی پاس کروانا ضروری ہے. اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا تو اس کے لیے ہمارے پاس یعنی کہ اگر جس نے قانون پاس کرنا ہے اس کے پاس کم از کم 1/3 میجورٹی ہو, چاہے وہ دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا لے قانون پاس کرانے کے لیے. یعنی 100 میں سے آپ کے پاس 67 لوگ اگر آپ کو فیور کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, 33 لوگ مائنورٹی. یہ جو ہوتی ہے نا, کبھی بھی کنسنسس سے کوئی چیز نہیں بنتی, لیکن دیکھنا یہ چاہیے
کہ 2/3 मेजोरिटी हो, ओवरवेलमिंगली मेजोरिटी आपको फेवर कर रही हो तो वो फैसला हो जाता है, क्योंकि एक एब्सोल्यूट कंसेंसस तो किसी सूरत में भी क्रिएट नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आई थैंक यू, मैं सर एक क्वेश्चन है सर, रिकॉर्डिंग सर क्विज के बारे में अभी बताओ, कहाँ सबमिट करनी है सर? जी वो क्विज जो आपने कहा था बेटा, क्विज आपका शाम को 7 बजे है आज, और आपने मूडल पे सबमिट कराना है और तमाम इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप के अंदर दे दी जाएंगी, आप परेशान ना हो। और आज शाम को इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भेज देना ये वाली। रिकॉर्डिंग कब आएगी सर? एक्सक्यूज मी सर। आ जाएगी जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मैं समझ लगा रही सर, वो दरअसल मैंने लेट ज्वाइन किया था, कनेक्शन प्रॉब्लम थी बेटा नहीं, वो तो बंद हो अटेंडेंस जाता है, बंद हो जाती है बेटा, अटेंडेंस बंद सर हो ये जाती है। क्वेश्चन सर, बेटा अब जी बताइए सर जैसे अगर हम मतलब कोई पार्लियामेंट से कानून पास करवाना चाहें, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं मतलब जो चलते हुए आ रहे हैं, अगर वो मुल्क के इंटरेस्ट में भी हो लेकिन अगर उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो कानून कैसे पास करेगा? हम इसके खिलाफ कौन से एक्शंस लेंगे? बेटा, मैंने आपको पहले कहा था कि मुल्क हमेशा तरक्की उस वक्त करता है जब कौम का जो इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट और लीडर का इंटरेस्ट रिकनसाइल कर जाए। अगर दोनों में तफावत होगी तो वो कामयाब नहीं चल सकता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कौमी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे आपके अपने भी पॉलिटिकल एम्स पूरे हों, साथ कौम की भी तरक्की हो। हमारे मुल्क में ज़्यादातर ये देखा गया कि ऐसे कानून बनाए गए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को तो फ़ायदा हुआ लेकिन कौम का नुकसान हुआ। ओके बेटा, आई थैंक यू, मैं सी यू इंशाल्लाह सर